everyone. Welcome to our online class YouTube channel of Biswakarma Competitive Point. Myself NARASINGH. Today we are going to discuss about HCF and LCM. जोटा को आमे ओडिया गो सागु एंड ल सागु जोटा कि गरिष्ठ साधारण गुणनीयक एवं लघिष्ठ साधारण गुणितक। आशा करूची आपण माने ए वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिबे। चलो देखिबा आज हमर टॉपिक HCF and LCM. Okay? HCF, highest common factor, and LCM, lowest common multiple. Okay? प्रथमे आमे दीटा नंबर लेना तो लेट 15 then another number 18 तो हम HCF और LCM आपको को प्रकार बाहर बोले प्रथम 15 और 18 को हम फैक्टराइजेशन करें माने 3 into 5 and 18 that is 3 into 2 into 3 okay then 3 into 5 is 3 into 2 into 3 here एठारे हम लिखा 3 ये होची हमर कॉमन फैक्टर that means ये तीन होची हमर HCF और ये 5 ये होची 2 and 3 एमान होचनी अदर फैक्टर्स तो HCF में गला हमर 3 तो LCM होची HCF into our other factors तो आमे एठा अदर फैक्टर्स को आमे एटा 5 गोटे अदर फैक्टर्स 2 into 3 आमे 2 into 3 गोटे टर्म बा आमे अदर फैक्टर होचे हमरे 6 तो ए अदर फैक्टर होचे 5 और 6 माने मु एठे 2 और 3 को अदर फैक्टर 6 नेबार कारण कोन सेटा को आमे आगु आगु देखिबा जे लेट आमे एटा को नेबा ए एटा को नेबा बी ओके तो ए एंड बी आवर अदर फैक्टर्स ओके देन आमे LCM को आमे लिखि पारिया कोन LCM equal to HCF into A into B okay then तो ए टर्म रो आमे A into B लिखि पारिया A into B equal to LCM by HCF okay then also HCF equal to LCM by A into B or LCM by other factors okay then another let two number 1 and 2 and then HCF and LCM then 1 into 2 equal to LCM into HCF if आमे आगु जानछे जे दीटा जदी संख्या अछि तार LCM और HCF रो गुणफल होचे से दीटा संख्या रो गुणफल जदी हम पहिला तीनटा संख्या रो गुणफल ताहाले 1 into 2 into 3 equal to HCF power 3 minus 1 into LCM that means एठा जो 3 लिखा है किंतु एठी किछ लिखा नहीं तो अगर जो HCF into LCM किंतु एटे HCF रो पावर काला 3 minus 1 किंतु एटे HCF रो पावर किछ लिखा ना कारण देखो एटे तीनटा टर्म अछि हियर n equal to 3 एटे दीटा टर्म अछि दैट इज n equal to therefore ये n minus 1 टर्म n equal to 2 then HCF is only HCF into LCM सेमली जदि चारिटा संख्या अछि 1 into 2 into 3 into 4 then our HCF equal to 4 minus 1 into LCM okay then वर्तमान आमे किछि एग्जांपल लेबा HCF और LCM let 15 18 and 15 18 and 27 here HCF and LCM
HCF and LCM. Okay, so HCM means highest common factor. Okay, here highest common factor is এই তিনটা নম্বর 15 18 and 27 তো 15 18 27 আমার কমন ফ্যাক্টর তো আমি অলরেডি এটা সিধা ডাইরেক্ট আমি জনা পড়ছি যে এটা কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে আমার 3 তো এটা হার্ড নাই কিন্তু LCM এর কোন আমি জানছি LCM equal to HCF into other factors, that means HCF into other factors, therefore HCF আমার কোন 3 into other factor এটা কোন রইলা আমার 5 এ 6 এ হচ্ছে 9 কিন্তু এটা আমাদেরকে আমি other factor সবବେଳେ কোন কইଥିଲି other factor সবବେଳେ হবো কো প্রাইম নম্বর কিন্তু 5 টা প্রাইম নম্বর কিন্তু 6 and 9 প্রাইম ফ্যাক্টর হলো দেন 5 multiple কিন্তু 6 and 9 পুরো 5 কোয়ার্টার 6 and 9 কমন কোন আছে 3 then here are 2 here are 3 then again 2 and 3 it is your LCM, that is 3 15 30 270 it is your LCM. Okay, let another example, simple example as 2 4 6 12 here HCF सबବେଳେ ଆମର কোন HCF মানে কোন highest common factor কারণ কই सबବେଳେ ଆମର factor টা सबବେଳେ जोटा हम सानो नंबर जो सबुठ सानो नंबर का हम चूज करिया जदि हम HCF बार बुझु कहीं देखिए जदि एटा 2 अछि 2 जदि डिविजन होला 4 6 and 12 देन हमको आ कोनोसी जिनिस करिया पड़ेनी कोनोसी कैलकुलेशन करिया पड़ेनी संगे संगे हमें 2 इज द HCF. ओके, LCM जदि बार करिया अछि LCM मींस मल्टीपल देन सबले 12 ला चूज करिए. ओके, 12 जदि 12 is equal to 2 4 and 6 then 12 is the LCM. कोनोसी कैलकुलेशन बा हम फैक्टराइजेशन रो कोनोसी आवश्यकता नहीं. ओके, आउट एग्जांपल देखो ये अछि 3 1.2 and 0.06. ओके, ये दशमिक संख्या वर्तमान LCM और HCF बार करिया तो जदि दशमिक नंबर अछि दशमिक संख्या अछि ताहाले हम तार HCF और HCF के बाहर करिया प्रथमे हमर काम होछि देखंतु 0.06 पॉइंट पर एटी केतरा नंबर अछि दीटा एटा पॉइंट पर केतरा अछि गोटे एटा किंतु पॉइंट पर आ किछ नै ताहाले हाईएस्ट अछि कोटे दीटा तो हम ए दीटा कन्वर्ट करिया केंति ए जदि दीटा अछि हम किंतु वैल्यू न चेंज करी तो 1.20 लिख परिया आको 3.00 एति लिख परिया देन प्रथमे आर HCF LCM के बारे में देखो HCF ए LCM. ओके, तो HCF पई तो हम वर्तमान में पॉइंट उठे देबा वर्तमान केते रहला 300 120 and 6. ओके, देन फैक्टर बार कर दा तो 6 ये होची 50 ये होची 620 ये होची 1 देन 10 ये मतलब 5 होची 2. ओके, then HCF by हमें only a chapter नोचे then that is 60 LCM by हमें 4 नोचे that is 6 10 5 2 बस 6 10 60 300 600 किंतु हमारा HCF by 60 not HCF तो 60 टा HCF आने पे देखो पॉइंट पर हमें देखो राइट डाउन दीटा छाड़ी पॉइंट पकाई जाए then एटा दीटा छाड़ी पॉइंट पकाया that means 0.6 is your HCF. Okay, then LCM then data point chhadi that is 6.00 that is 6 is the your LCM. Okay, then वर्तमान में किछि क्वेश्चन ऊपर को जेबा. ओके, देन धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल को हमें उठेला जते आगु तक को हमें जेबा लेवल ता टिके ऊंचा ही जो तो प्रथम बहुत से ध्यान करंतु क्वेश्चन नंबर 1 द LCM of two numbers is 864 and their HCF is 144 if the small number is
288, then find the another number. तो प्रथम कहला the LCM of two numbers is 864. That means दी संख्या रो लसागु देछि 864 and गसागु देछि 144. Then if the small number is 288, यदि सानो संख्या हमर जदि 200 अछि, then आउ गोटे संख्या केते? तो प्रथम देखंतु हम प्रथम करछे HCF into LCM equal to 1 into 2. ओके तो HCF देला LCM देला गोटे नंबर देछि आ गोटे नंबर पचारछि तेनु करी हम कोनो कैलकुलेशन दरकार नै डायरेक्ट खाली HCF जगह HCF LCM जगह HCF इनपुट कर दियो HCF कोच केते 864 योची सॉरी HCF is 144 and LCM is 864 first number is 288 second number हम पचारछि then second number हम कोन करिया 864 into 144 by 288 then divide करकु 142 1 जा ये 2 then 2 1 जा it is 432 then second number is your 432 is your option B is the answer. Then our second number. Let's come to the another question. The product of HCF and LCM of two numbers is 24 and difference between them is 2. Find number is. The product of HCF and LCM. तो लसागु और गसागु गुणफल देछि 24 सेमानक भीतर डिफरेंस देछि 2 तो ए क्वेश्चन को प्रथम कथा देखो HCF और LCM जदि गुणफल देछि 24 दैट मींस हम जेकोस बाबू जे दीटा संख्या हमको देछि से दीटा संख्यार गुणफल होछि 24 तो एते बड़ भी संख्या नै हमको जानिया 24 टा जो असंभव कथा तो एमिति संख्या दीटा नेबा जोडे कि हमरो गुणफलटा 24 हो किंतु सेमानक डिफरेंस हो 2 तो 24 रे कोन कोन हमर तार प्रोडक्ट बाग करो 1 into 24 then 2 into 12 okay then 3 into 8 4 into 6 then बस इतना तो एते फैक्टर भीतर हम खाली ऑप्शन वाइज भी आप डायरेक्ट लिख परिया जे 6 4 गुणफल होची 24 और डिफरेंस होची 3 तो ए क्वेश्चन दा कोनो कैलकुलेशन का आवश्यक नहीं डायरेक्ट ऑप्शन ओरिएंटेड 6 and 4 is the answer. Then question number 3. The LCM of two number is 495 and the HCF is 5. If the sum of the numbers is 100, then find the difference. Okay. First of all, the LCM of two number is 495. That means data संख्या लसागु देछि 495. Okay. LCM देछि 495 and HCF is 5. Okay. HCF is 5. Okay. If the sum of the number is 100, here this I plus second first number and second I that is 100. Then find the difference. तो दीटा नंबर भीतर डिफरेंस पचाछि तो हमें एते पढ़थिले LCM और HCF और अदर फैक्टर भीतर रिलेशन दैट मींस अदर फैक्टर कोन A into B हम जानले A into B टा कोन LCM by HCF. ओके बहुत सेटा ध्यान करंतु अदर फैक्टर जोटा कि A into B equal to LCM by HCF. तो LCM केते हमरो 495 HCF होची 5 तो कट कले 5 45 then 5 45 that is 99. तो प्रथम रे कहथिली यार A into B अदर फैक्टर्स किंतु कोन समान O प्राइम दैट मींस ए जो 99 ताको हम एमिति दीटा भाग करिया समान जेमति को प्राइम दैट इज 11 and 9 तो हमें लिख करिया A को 11 B को 9 और A को 9 B को 11 हमें नहीं करिया किंतु से पूछी if the sum of the numbers is 100 then find the difference हम पचास से डिफरेंस आके किंतु हमें A और B जानले किंतु से नंबर जागा जानना दे किंतु नंबर ता होचे कोन हमरो ए जो अदर फैक्टर कोन नंबर ता होचे हमरो अदर फैक्टर इनटू HCF HCF रे अदर फैक्टर गुणले से होचे हमरो नंबर दैट मींस HCF केता होचे हमरो 5
55 is one number into 5, that is 45 is another number. That means देखो हमरो कंडीशन देछि 1 आउट टू 100, देखो 55 ये 45 हेला दीटा नंबर सम होछि 100, तो हमको पचाछि फाइंड द डिफरेंस. द डिफरेंस इज कते 55 minus 45, that is 10. Your option A is the answer. Then number 4, question number 4. The HCF of two number is 8, which one of the following can never be their LCM. कहला जदि दीटा संख्यार गसा को 8 हो, which one of the following can never be their LCM. तो ऑप्शन जेति की देछि ता भितर कोटा तार LCM हे परियो. ओके, तो हम कोटा टर्म एटा सिखिले LCM is the HCF into another product. ता माने हम गोटे लाइन रो कोन बुझले, हम ए गोटे लाइन रो बुझले जे LCM HCF रो LCM दा HCF रो कोन मल्टीपल ना नहीं, LCM दा HCF into another product. ता माने कोन HCF रो गोटे मल्टीपल हो HCF. किंतु हम क्वेश्चन अनुसार देखले, देखो द HCF ऑफ टू नंबर इज 8, जदि गसा जदि 8 हो ता आ भितर कोटा से LCM हे परियो, कोटा LCM हे परियो जोटा तार मल्टीपल है नथियो. दैट मींस 24 8 मल्टीपल, 32 8 मल्टीपल, 56 8 रे मल्टीपल, किंतु 60 हम 8 मल्टीपल नहीं. दैट मींस योर आंसर इज 60. ओके, देन नेक्स्ट number 5. The LCM and HCF of the number 28 and 42 are in the ratio. Okay, देखो another same term. If LCM equal to HCF into another product, then LCM equal to HCF in another product, then हम जान रहे हैं LCM ना HCF रो गोटे मल्टीपल. therefore जदि that means LCM ना HCF into something. okay, LCM equal to HCF into something. that means ये कुछ LCM रो गोटे फैक्टर, HCF भी ता LCM रो गोटे फैक्टर. that means ये सब बेले ये जदि 1 हो then ये कोन something जा भी हो जदि LCM रो गोटे मल्टीपल, जदि LCM दा HCF रो गोटे मल्टीपल, ता मींस HCF सब बेले कोन 1 हेले आर मल्टीपल ये केते होजो हम किछ फरक पड़. दैट एनादर बारे हम तो जलरा को पाइला कहया LCM by HCF जहां भी आसीबो हमरो गोटे परफेक्ट नंबर आछो, से 2 3 4 5 जहां भी आछो ताको हम रेशियो आकार कोन रखिया गोटे नंबर आछो. दैट मींस कोन P by Q आकार रखले Q दा कोन होबो सब बेले 1, Q दा सब बेले 1. दैट माने तमन HCF दा सब बेले गोटे गुण, LCM दा केते गुण होछु. तेनो कहले हमको LCM रो HCF तो हमर क्वेश्चन अनुसार जदि LCM is to HCF मागिछि, LCM is to HCF माने HCF सब बेले 1 पर, LCM बाकी केते पर होछु हम किछ लिख नै. ओके, सेम थी जदि HCF is to LCM जदि पचाछि HCF हो 1 पर, LCM नाम रे केते हम जा किछ लिख नै. तो ऑप्शन देखो तो A कहला 5:6, B कहला 7:2, C कहला 6:1, C होछि 2:1. दैट मींस जदि हमको HCF मागिछि, LCM and HCF means second part 1, that is option C. Option C is your answer, 6:1. okay, the next question. If the ratio of two numbers is 2:3 and the LCM is 54, find the sum of two numbers. okay, तो ए भलिया क्वेश्चन रे प्रथम देखियो if the ratio of two number is 2:3, that is 2:3. LCM is 54. okay, LCM is 54. तो दीटा नंबर रेशियो जहा तमर अदर प्रोडक्ट रेशियो था. दैट मींस ए दीटा मल्टीपल कर केता आसी 2 into 3, that is 6. that means हमर HCF equal to 54 by 6, that is 9. therefore the other find the sum of two numbers. The numbers are 2
into HCF and 3 into HCF, that is 2 into 9 and 3 into 9, that is 18 is 27. The answer is find the sum of the two numbers, that means 18 plus 27, that is your 45. Okay, तो here अब थोड़ा देखो देखो हम जो पहले 1:2 equal 2:3, तो हम पढ़ते रेशियो प्रोपोर्शन में किछ पढ़ चाहिए तो 2 और 3 हो ताला हम 2x 3x नो चाहिए कि तुम ये डायरेक्ट 2 into 3 मल्टीप्लाई कर देली 6 कर देली कोन में ना हम सब पढ़ लीजिए i ला कोन ए सेकंड रे HCF into other product, HCF into A, it is HCF into B. The A और B सेटा होता है हमारा प्राइम को प्राइम, that means 2 and 3 are को प्राइम, then हम HCF को जब HCF कट कर दा ताले A को 2 B को 3 हम नहीं परिया ताले HCF जा करे 2 into 3 6, then LCM by your other factor, that is your HCF, that is 54 by 6 equal to 9. Then हम तीन नंबर में परिया कौन other factor into HCF is your one number, then other factor, then HCF is another number. Then question is your find the sum of two numbers, then 18 plus 27, that is your 45 is your answer, option D. Next question, the LCM of two numbers is 20 times of their HCF. The sum of the HCF and LCM is 2520. If the small number is 480, then find other number. Okay, so formula the LCM of two number is 20 times of their HCF, that means LCM equal to 20 into HCF. Okay, if the sum of the HCF and LCM is 2520, sum कितने कहला 2520. If the small number is 480, जल्दी सानो संख्या टा 480 ताहाले आउट संख्या केते देखो हमें आ पूर्व पढ़ले LCM टा कोन another factor other factor into HCF, that means here 20 is कोन A into B, ता माने हमें इडा डायरेक्ट लिख परिया 20 को डायरेक्ट हम लिख परिया 24 into 5. Okay, that is co-prime, ताको एमिति भांगिया पड़ियो जोटा कि हमर co-prime होतो 4 and 5 कहीं ना HCF समान होलो 1, that means 4 and 5 are co-factor. तब जान चाहे तो 4 is the smallest number, 5 is the greatest number. तो हम क्वेश्चन पचार छी if the small number is 480 find the other number. यदि small number ता 480 that means 8 है हमर कोन 8 होची HCF ये होची HCF, तो एटा होची कोन 480 another number पचार छी. तो यदि small number ता 48 480, that is a 4 into HCF equal to 480, that means HCF is your 480 by 4, that is 120. Okay, then हम HCF जगह में जब 120 पके दिया, that means another number कौन 5 into 120, that is your 600. Then the other number is your 600, that is option A. Okay, देखो अब तक देख दियो LCM equal to 20 times of HCF. Okay, that means हमें first note रा में पढ़ चाहिए LCM होची HCF into other products. Okay, तो other product होची हमर 20, that means A into B होची हमर 20. तो हमें 20 टा को एमिति प्रकार भांगिया जोटा कि समान होची को प्राइम, that means 20 equal to 4 and 5 4 into 5 20. हमु कोइ छी कोन if the small number is 480, तो small number देछि त हमर 480, तो small number हमें के नाम छै other factor into HCF, that means 4 into HCF equal to 480, that means HCF केता छियो 480 by 4 equal to 120. ताहाले हमें another number के जान पे 5 into HCF, that is called 5 into 150, that is your 600 is your answer, option A. Next question, the sum of two numbers is 36 and their HCF and LCM are 3 and 105 respectively. The sum of the reciprocal of two numbers is this. Okay,
कोन कहला the sum of two number is 36, that is 1 plus 2, that is 36. And HCF and LCM, their HCF and LCM are 3 and 105. तो हम लिख करिए डायरेक्ट A into B equal to 105 by 3, that is LCM by HCM. तो आंसर 3 1 3 3 9 3 5, that is 35. तो other factor, that is A into B equal to 35. तो आपको आगे भागी परिया स्प्लिट करबे केमली ताको को प्राइम नंबर, that is 5 in 7. ओके 35 को हमें 5 और 7 अगर स्प्लिट करबे तो क्वेश्चन हमको पचार छी the sum of the reciprocals. ओके the sum of the reciprocal. तो reciprocal मान नंबर दे रो reciprocal means कोन हम जोटा ओडिया पढ़ते व्युत्क्रम, that means जदि नंबर x, that is तार व्युत्क्रम कोन 1 by x, y तार व्युत्क्रम 1 by y. जदि हमर दिरा नंबर एटा x से y हो तार व्युत्क्रम ला कोन हो 1 by x 1 by y. तो हमर नंबर दिरा प्रथम आनिया पड़ियो तो हमर 5 प्लस 7 प्लस a and b, तो नंबर दिरा केता छै 5 into HCF, that is your 3 here HCF 3, that is ये 15 ये होची 21. नंबर दिरा असला 15 और 21. then तो हम पचार छै sum of reciprocal, that is 1 by 15 plus 1 by 21. therefore answer 15 plus 21 by 15 into 21, that is 36 by 15 into 21. कट करे 3 5 15 3 12, then 3 3 7 3 12, that is your 4 by 35 your answer. 4 by 35 is your answer, is option A. Okay, next question. The sum of two numbers is 36 and their HCF is 4. Then how many pairs of these numbers are possible? Okay, the sum of two numbers is 36. Okay, the sum is 36. HCF 4. Okay, then first आपको 36 by 4 केता देखो, that is your 9. तो 9 होची तमरो other product, से other product रो sum दा होची 9. Okay, जदी sum आउ HCF जदी देछि sum दिटा देछि तमरो 36 and HCF जदी 4, then sum by HCF is your other product, that means A plus B दा होची 9. that means हम ऑप्शन रे प्रथमे देखो how many pairs these numbers are possible. तो प्रथमे हम जाने A और B माने कोन को प्राइम means हम 9 को दिटा नंबर को मिसेले 9 आसी प्रथम सेगुडा देखला, किंतु हेबा कोन पड़ियो प्रतिटी नंबर बा प्रतिटी पेयर हमको को प्राइम हेबा दरकार. that means 9 नंबर कोन 1 plus 8 2 plus 7 3 plus 6 and 4 plus 5. okay, then reverse. okay, single type. तो 5 plus 4 6 plus 3 7 plus 2 8 plus 1 सेटा लिखे दरकार नै. तो एति के पेयर हमर टोटल रहला, किंतु हमहु पचाछि A केतना पेयर हो जेमति कि A और B नंबर कोन को प्राइम हेबा दरकार. तो ए जगह कोन 1 8 को प्राइम, तो 1 2 7 को प्राइम, that is 2 3 and 6 these are not co prime. then you can say 4 and 5 that is co prime. so कितना पेयर होला टोटल नंबर ऑफ पेयर इज 1 2 3. तो आंसर इज योर 3, ऑप्शन D. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट वन जो इच्छा करो जो डाउट रहला कमेंट बॉक्स में लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The least number when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves remainder 2 in each case. So in all cases find the number. Okay, so कुछ एमिति the least number सबुठ एमिति गोटे सानो संख्या को जोटा कि when divided by 4, 6, 8, 12, 16 से नंबर को 4, 6, 8, 12, 16 रे डिवाइड करिया ताहले सब केस in all case the remainder 2. तो सब केस रे हमको दरकार भागशेष 2. अच्छा, तो प्रथम कथा ए जगह रे 4 6 8 12 and 16 रो हमको LCM बारा करे पड़ियो.
तो देखो ए जगह एलसीएम केम बात करिया पड़छि देखो जदि ए टाइप रो नंबर देखियो चारटा पांचटा प्रथम देखो हम एलसीएम रे प्रथम ए नंबर को देखिया एलसीएम सबरो हाईएस्ट नंबर को देखो तार फैक्टर ए भीतर कोन अछि कि देखो 16 को 4 कट कले 4 टाइम्स तो काट दियो 16 को 8 कट कले कट छी काट दियो ओके देन आउ बाकी कोन रहला जे 12 एंड 6 तो आल्सो 12 को 6 ये मध्ये गोटे फैक्टर तनको ये भी कैंसिल कर दियो आ बाकी रहला कोन 12 और 16 तो एमिति दीटा नंबर ए जो 12 और 16 रो हम एमिति गोटे मल्टीपल को नेबा जोटा कि कॉमन माने लीस्ट मल्टीपल नेबा जोटा कि 16 रो मल्टीपल हेतो 12 रो मल्टीपल हेतो देखो आप जदी 16 1 नेबा 16 के 16 12 के 12 हबनी 2 रे नेले 16 गुणे 32 12 रे 32 9 देन 16 3 रे नेबा ये होची 48 आर भी होची 48 मल्टीपल दैट मींस आर होची आर 48 हो जारो LCM that means 4 6 8 12 and 16 रो LCM होची 48 that means least common multiple means 4 रो मल्टीपल 48 6 रो मल्टीपल 48 8 रो भी 48 तो 12 16 समस्त रो मल्टीपल इज 48 that means ए जागर जदी हम डिवाइड करिवा ताहाले कोन रिमाइंडर रहियो 0 हमु क्वेश्चन पचाछि जे leaves remainder 2 in all case हमु दरकार रिमाइंडर 2 जदी 48 ता जदी रिमाइंडर 0 रहउछि हमु दरकार रिमाइंडर 2 that means हम जदी 48 plus 2 करदा then each case रा रिमाइंडर 2 रहियो then answer is your 50 okay next question find the greatest number of 5 digit which when divided by 3 5 8 and 12 leaves remainder 2 ओके कोन होछि 3 5 8 एंड 12 रे जदी डिवाइड करिया ताले को 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटा हमकु भागशेष 2 दबो प्रथम 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9999 पांचटा तो नंबर कोन हमर 3 5 8 एंड 12 तो प्रथमे हम एलसीएम बार करो तो एलसीएम पई यूज ग्रेटेस्ट नंबर रो बाको तार फैक्टर कोडा अछि 3 कट करो देन ए भीतर अपन रहला प्राइम नंबर 5 रख दियो 5 8 एंड 12 तो 8 एंड 12 दे आर नॉट को प्राइम तो प्रथम सेमानकर फैक्टर ता कॉमन फैक्टर कोन अछि 4 बार कर दियो आ वेट रहला कोन 2 एट रहला 3 से 2 3 तो एलसीएम केता आसला 520 ये सब 120 ओके तो 120 होछ तमरो एलसीएम दैट मींस हम पचार से कोन को 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटा एमानो द्वारा डिवाइड जन हले रिमाइंडर रहियो 2 दैट मींस ए 120 को 8 बार डिवाइड करो 120 तो 120 8 ज 960 देन 39 नौला बार 3 की 360 देन 39 again 9 तो 1 3 that is 360 that is your 39 that means तमे जदि 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को हम जदि 120 रे डिवाइड करछे ता रिमाइंडर होचे 39 ता माने हम जदि 39 रा एथु बाहर कर देबा ताहाले से कंप्लीटली डिविजिबल हो जे 120 ओके देन बाहर कर दियो 9999 इज 39 दैट इज योर 99960 ओके किंतु क्वेश्चन हमर को होची रिमाइंडर इज 2 देयरफॉर तो हम कोन दुइटा खाली पढे दे ताले रिमाइंडर होय जो हमर 2 तो आंसर इज 99962 योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके जदि आपण मान को ए वीडियोटा आज रो वीडियो भल लागि ताले प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक शेयर एवं कमेंट करंतु आ अधिक अधिक सब्सक्राइब करंतु ताले हम आगु और वीडियो हम देबो धन्यवाद Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.